Assalamu alaikum Nazreen and welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of the Cricket World Cup 2023। और आज हम हमारे सामने हमारे दरमियान बल्कि स्टूडियोज में शामिल है आतिर वंस अगेन। और इनसे हम बातचीत करेंगे क्रिकेट के बारे में एंड द recently concluded couple of matches since we last talked to him। और बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब आपके सामने पेश है। तो द मैचेस इन क्वेश्चन, सबसे पहले पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश एट कोलकाता, और फिर हम आज के मैच के बाद आएंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि पुणे में खेला गया। तो आतिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू में कहा था, तकरीबन उसी तरह का स्क्रिप्ट कुछ लिखा गया कोलकाता में। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, पाकिस्तान ने पहले यानी कि टॉस तो नहीं जीता, बांग्लादेश ने जीता और उन्होंने बैटिंग की पहले। और बांग्लादेश जिसे आपने कहा कि उनको कब बड़ी जल्दी दबाव में ले लिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, और कोई ज्यादा स्कोर नहीं कर सके और 204 रन्स पर कंप्लीट हो गई उनकी इनिंग्स। जी उसके हाँ, बाद बिल्कुल। आई थिंक कुछ पाकिस्तान ने दबाव में डाल दिया और कुछ मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने खुद भी अपने आप को दे शॉट देमसेल्व्स इन देयर फुट। आई फील के मतलब कि फॉर अस इट वाज द ग्रेट स्टार्ट वाज शाहीन अफरीदी की पहली ओवर में विकेट। वो अपेरेंटली जब वो पहली ओवर में विकेट लेते हैं तो एकदम से कॉन्फिडेंस का हाई हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई लाइक दोज अर्ली विकेट्स ऑफ शांटो और हसन तंजीद जो है उसको दैट वाज द फर्स्ट ब्लो। लेकिन आई फील कि मतलब कि बांग्लादेश डिड वेल। बीच में उनकी पार्टनरशिप लग गई थी शकीब और महमूदुल्लाह की, और महमूदुल्लाह को इस दफा उन्होंने ऊपर भी लेके आए हैं, पहले वो 7 पे लेके आते थे। एंड इवन डिस्पाइट दैट आई फील के द लक दैट वेंट पाकिस्तान वेज के शाहीन को जो वापस लेके आए अटैक में, उसने वो पार्टनरशिप ब्रेक की है एंड देन इट वाज ओवर। उसके बाद फिर देन थिंग्स जस्ट क्लियर्ड अप फॉर अस। एंड आई ऑल्सो थिंक के लोगों को शायद इतना रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन जो मोहम्मद वसीम जूनियर की आखिरी 3 विकेटें इन क्विक सक्सेशन थी ना, वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि टेल अगर उनकी लंबी चलती 250 हो जाता या 260 तक चला जाता स्कोर, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी टाइट मैच होता। थोड़ा सा पाकिस्तान कोलैप्स हो जाती तो एकदम से हमें प्रेशर आ जाता। वसीम आया, उसने बहुत जल्दी क्लीन अप किया और 2 फायदे हुए हैं। एक, उन्होंने पूरा 50 ओवर नहीं खेले, एंड सेकंड मतलब कि उन्होंने को रन नहीं करने दिया। एंड तीनों के तूने उन्होंने रिवर्स स्विंग से एटलीस्ट ये तो हमें बता दिया कि देयर इज वन पेसर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में 140 की स्पीड पे कराता है और रिवर्स स्विंग कर सकता है। सो इट वाज रियली गुड टू सी अ पाकिस्तान क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी बॉलिंग एट द एंड। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, मोहम्मद वसीम क्लीन्स अप द टेल। इस बार फिर उन्होंने विकेटें ली हैं, 3 विकेटें उनकी थी, 3 शाहीन की। हारिस रऊफ ने भी 2 विकेटें ली। और वंस अगेन पाकिस्तान स्पिन इज लैकिंग, विकेट्स नहीं मिल रही स्पिन पे, और मोस्टली फास्ट बॉलर्स ही विकेट्स ले रहे हैं। बट द गुड न्यूज़ इज के शाहीन शाह अफरीदी टुक विकेट्स इन द बिगिनिंग, और उन्होंने अपने यानी कि उनके अपने जो सेकंड और थर्ड स्पेल्स हैं उसमें भी वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एज ही इज प्रोग्रेसिंग इन द टूर्नामेंट, ही इज आल्सो लीडिंग विकेट टेकर एट दिस मोमेंट। तो पाकिस्तान ने अपना जो इस बार जो चेंजेस उन्होंने की थी, उन्होंने 3 चेंजेस अपनी ब्रिंगिंग की। द मोस्ट नोटेबल वाज टॉप ऑफ द ऑर्डर फखर जमान वाज बैक, एंड अ डिफरेंस टू द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स क्योंकि ही जस्ट ब्लिट्स्ड अवे। बिल्कुल, फखर ने मतलब कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दिया। एंड आई थिंक वो टाइम ऑफ आफ्टर ही वाज हैविंग अ पुअर रन ऑफ फॉर्म, आई थिंक दैट हेल्प्ड। और वही अब सारे लोग कह रहे थे कि इतने छक्के बाकी उन्होंने जितने मारे जितने फखर ने एक इनिंग्स में मार दिया, वो भी 7 छक्के। Yeah. लोगों को गिला शिकवा था कि जी पावर प्ले में छक्के नहीं मारते, और फखर ने वो भी गिला दूर कर दिया। सो आई थिंक मतलब कि ऑल्दो देयर वर कपल ऑफ स्ट्रीकी शॉट्स, तो फाइन लेग के ऊपर या आई थिंक थर्ड मैन के ऊपर इसने 1-2 एजेस भी लगे थे। लेकिन फखर वाज प्लेइंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आई फील उससे अब्दुल्ला शफीक को भी जरा रिलैक्सेशन हो गई कि ही डजंट हैव टू टेक द लीड टू बी द अग्रेसर, जो इमामुल हक उसके ऊपर प्रेशर डालता था। तो फखर प्लेड फ्रीली, अब्दुल्ला ने अपने स्ट्रोक प्ले किया, एंड आई थिंक थिंग्स वर रोलिंग आउट वेरी नाइसली। आई थिंक 120 ऑड की फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप थी, एंड
एंड आई थिंक द पेस ऑफ दैट पार्टनरशिप इज इंपॉर्टेंट. अगर आप पाकिस्तान को देखें ना, टिपिकल पाकिस्तान क्या होता है, ये 205 का स्कोर उन्हें 45 ओवर में करना था, और जो कि मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल स्लो अपना टाइम लेंगे. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि दे वेंट फॉर द किल. एंड इवन फखर ने बाद में अपने प्रेस इंटरव्यू में भी कहा कि द आई वुड हैव डन अ सेंचुरी. मैं तो सिर्फ एक्सेलरेशन की, आई वाज ट्राइंग टू फिनिश द गेम एज सून एज पॉसिबल, एंड दैट्स द राइट इंटेंट. आई फील कि एट दिस पॉइंट ऑल द मैच तो जीत गए. आई थिंक नाउ वेयर, वो नेट पिकिंग वाली बात ही होगी, बट एट सम लेवल आई थिंक बाबर आजम की जरूरत नहीं थी उस टाइम आने की. वी हैड ओनली 60-70 रन्स टू गो, और अगर इंटेंट यही था कि हमने खत्म करनी है जल्दी, तो बाबर इज नॉट अ हिटर. ही टेक्स अबाउट 20 बॉल्स टू सेटल हिमसेल्फ इन. मुझे लगता है इफ्तिखार को पहले भेजते और उसको हिटिंग करवाते, फिर रिजवान को भेजते और फिर एक और हिटर भेज देते. इनफैक्ट इट वुडंट हैव बीन अ बैड चॉइस टू put Iftikhar up and then send Salman Ali Agha to give him some batting practice, ताकि वो जरा हो. But overall मतलब it worked out. And we finished the game in quick time. 32 overs में जो हमने खत्म किया वो बहुत important है, क्योंकि net run rate जो है ना वो improve हुआ है from what we were. So that's critical. सो जैसे कि आपने कहा कि गेम फिनिश्ड क्वाइट अर्ली, 33rd ओवर में ही कंप्लीट हो गया, 205, बिट क्विक. It could have been even quicker had hitters been promoted up the order. Khair, so that was Kolkata for Pakistan. Moving on to today's game that occurred in Pune, which was also important क्योंकि ये linked है. Pakistan got the 2 points. The team ahead of them, New Zealand, who have lost 2 matches in a row. They lost to Yeah. India, and then they also lost another game heading into this match. So, Yeah. उनके लिए बड़ा important था. They played South Africa, who were in good form. Pune is known as a batting pitch. New Zealand won the toss and elected to field. They gave South Africa batting first the opportunity, जो कि यूजुअली साउथ अफ्रीका दोनों हाथों से ग्रैब करती है. दे पुट अप जी. अ स्कोर. क्विंटन डिकॉक put another century in. Razzie Van Dusen put another century in, or a huge stand then put up. Although at one stage it didn't look like they're going to get 357, लेकिन फिर जी. some late hitting helped them on their way, और 357 उन्होंने पुट किया. कैसा लग रहा था आपको साउथ अफ्रीका की इनिंग्स? हाँ, इट वाज अ रन फेस्ट. एंड आई थिंक एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर स्पेशली साउथ अफ्रीका बैटिंग पर, आई थिंक दोनों टीमों को अपने अपना स्ट्रेंथ ही मिली है. न्यूजीलैंड को चेस करना पसंद लगता है, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काम किया था. बट साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट तो इनविंसिबल लगती है. वो उसने क्विंटन डिकॉक ने बूंदा बना दिया था सारे न्यूजीलैंड बॉलर्स का. दे डिडंट रियली नो वेयर टू बोल टू हिम. एंड रैसी वैन डूसन आई थिंक लकी थे. आई थिंक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था बाउंड्री पे. एंड देन ट्रेंट बोल्ट ने भी 2-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं बीच में. बट ओवरऑल लाइक रैसी उनकी रियली पेस्ड हिज इनिंग्स रियली वेल. एंड द एंड उन्होंने तो बहुत ज्यादा हिटिंग शिटिंग कर दी थी. आई थिंक इट्स आल्सो सम क्रेडिट टू द कैप्टनसी के इवन व्हेन आई थिंक क्विंटन डिकॉक आउट हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मार्करम उन्होंने लेफ्ट राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन के लिए मिलर को भेज दिया. एंड मिलर स्टार्टेड हिटिंग ऑफ द स्क्रूज, और उसने मतलब कि काफी आई थिंक हाफ सेंचुरी उसने भी कर ली थी. So it was just a dominating performance, or putting runs on the board seems to be South Africa's forte. और आजकल उनकी डेप्थ बैटिंग मतलब कि वो बहुत ज्यादा इट सीम्स एज इट्स इन ऑर्डर. आगे तो अभी जेंसन की बारी नहीं आई. जेंसन प्लेज अमेजिंग कैमियोज एज वेल. तो आई थिंक देयर ऑल वर लुकिंग वेरी सॉलिड. और बाकी आपकी बात सही है कि एट वन पॉइंट आई थिंक 40th ओवर में वो 230-40 ऑड थे. लग नहीं रहा था कि वो 350 तक करेंगे, क्योंकि वो एक 6-7 ओवर्स का स्पेल आया था जिसके अंदर उन्होंने रोक लिया था. बस फिर मिलर ने, लेकिन मेरे ख्याल से ही जस्ट टुक चार्ज अराउंड द 44th ओवर. उसके बाद फिर देन ही नेवर लुक बैक. तो उसके दैट Yeah. रियली मेक डिफरेंस. In response, after putting that score, usually South Africa are good in defending it. और यही हुआ कि न्यूजीलैंड जो है they never got started, और wickets fell at regular intervals, और कोई partnership नहीं बनी. In fact, it never looked कि न्यूजीलैंड इस हदफ को चेस कर सकती है. और मार्को येंसन की शुरू में विकेटें थी, फिर जेराल्ड कुर्टसी जो कि इनके अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने भी विकेट लिए. उसके बाद बाकी चिप्ट इन, स्पेशली केशव महाराज, वो चार विकेट उन्होंने ली, और नेवर गॉट गोइंग. माइनस के फिलिप्स ने एंड में उनको
110 फॉर 8 से लेके 160 तक ले गए, क्योंकि मैट हेनरी इंजर्ड थे, उन्होंने आया, एंड दे गॉट सम रन्स इन द एंड टू इम्प्रूव व्हाट वाज अ स्टम्बलिंग नेट रन रेट। न्यूजीलैंड स्ट्रगल करती। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी ना, मैंने मैच से पहले भी शायद आपसे बात कर रहा था कि भाई कॉनवे को, रविंद्रा को और मिचेल को, ये तीन है इनके कोर न्यूक्लियस ऑफ द बैटिंग। इनको आप चीपली आउट कर लो, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन इनको चीपली आउट कर दो, थिंग्स ड्विंडल कर देंगे। एंड वैसे भी स्कोर इतना ज्यादा था कि अगर ये 50 भी कर लेते तीनों तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाती। कॉनवे को, जेंसन, और जेंसन इज नाउ बिकमिंग दिस रियली अमेजिंग स्टार फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि एक जमाने में लगता था कि यार रबाडा के बगैर तो ये कर ही नहीं सकते ना, एनगीडी का ना। जेंसन ने तो इवन रबाडा को रेस्ट भी करवाया था, ही स्टिल हेल्ड द न्यू बॉल वेरी नाइसली। और उसकी एक तो वो 6'8" है, वो बहुत ऊंचे से, मतलब कि उसकी हाइट काफी ज्यादा है, वो बॉल कराता है तो मूव भी होती है और बाउंस भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप रविंद्रा वाली बॉल देखेंगे तो आई थिंक पेस से ज्यादा ना वो बाउंस से जरा आप परेशान हो गए थे कि ये क्या हुआ है। एंड देन ही फ्लिक्ड इट ऑल द वे डाउन टू फाइन लेग, और वहां कैच हो गया उसका। कॉनवे का भी ये था कि वाज जस्ट मूविंग सो मच, तो वो अर्ली ऑन वो मूवमेंट जो है ना, इट्स हार्ड टू टू नेगोशिएट। तो आई थिंक वो वंस दोस 2 विकेट्स वर आउट, फिर उसके बाद मिचेल के सामने उन्होंने महाराज को रख दिया। वहां वो स्पिन, आई थिंक वो आपने देखा होगा कि इवन जब इंडिया वाले मैच में यादव भी उसको ट्रबल कर रहा था मिचेल को, मतलब कि ही वाजंट फ्लोइंग वेरी फ्रीली विद हिम। तो उन्होंने महाराज को रखा है, और दैट दैट रियली मेड अ डिफरेंस। सो आई थिंक वंस दैट टॉप ऑर्डर वाज गॉन, आप मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर से कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो चेसिंग 350, लेकिन वो तो महाराज के आगे तो सारे लोग लंबे ही पड़ गए, अपार्ट फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने मतलब कि लास्ट मिनट कैमियो कर दिया, वरना तो इनका एनआरआर तो और भी तबाह होने वाला था। लग नहीं रहा था कि 120 को भी पार करेंगे वो। But yeah, like I think it's South Africa's bowling unit looks very complete, just like जैसे इंडिया का लग रहा था कि you have this Bumrah who's really accurate and bounce and pace के साथ करा रहा है। मेरे ख्याल से उसके पैरेलल में जैनसन रख सकते हैं आप। एंड देन जैसे आपका यादव है उधर, यहाँ महाराज इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड देन देव गॉट लाइक चेंज अप बॉलर्स दैट डू द जॉब। कोएट्सी इज वेरी हैंडी, मतलब कि आप Yeah, 140s में कराता है। In fact, one of the faster bowlers in the World Cup. and he's taken And quite a then lot of wickets in this World Cup wickets भी already, उसने ली हैं, alongside bats Martin. well. And it's interesting कि हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट में की जब बात करते हैं तो कोएट्सी और जेंसन और महाराज की करते हैं, और टूर्नामेंट से पहले इट वाज रबाडा हु वाज Yeah, थॉट टू बी द मेन स्ट्राइक फोर्स। उसकी तो वो तो एक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड में चले गया कि अच्छा वो एक सपोर्ट बॉलर है। और correct. एनगीडी की तो बात भी नहीं आती। तो आई एम सीइंग दैट दे हैव सच अ strong bowling force के now they're shaping up well, and they're also Yeah. now peaking at the right time. So, as a result of these two matches, South Africa are almost confirmed to the semi-finals. In Hmm. fact, they are top because of net run rate. न्यूजीलैंड फोर्थ पोजीशन पर है, पाकिस्तान फिफ्थ पोजीशन पर है। नेट रन रेट का डिफरेंस है, नेट रन रेट न्यूजीलैंड का गिर चुका है काफ़ी, 0.4 में आ चुका है। और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच इम्पोर्टेंस या अहमियत पकड़ गया है फॉर द वीकेंड एट बेंगलोर। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी और भी मैचेस हैं दोनों टीमों के, और आगे देखते हैं क्या क्या बनता है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन दिलचस्प होता जा रहा है। तो thank you very much, Aatir, for joining us. Thank you for having me. Assalamu alaikum. Okay, जी, अस्सलाम वालेकुम।